Hello friends, welcome to Manu Law Classes. मेरा नाम गौतम दीक्षित है. Now today it is the first month of May, that is 1st May 2023, and आज का significance एक होता है, that is 1st May. Every year we celebrate it as May Day, which is the International Labor Day. ठीक है, International Labor Day. So International Labor Day, it signifies the सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट्स ऑफ द लेबर. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो इंटरनेशनल लेबर डे है 1 मई को जो हम अडॉप्ट करते हैं, तो एक्चुअली इसका एक हिस्ट्री है. ओके, रिलेटेड टू शिकागो इन यूएसए, दैट देयर वाज अ प्रोटेस्ट बाय द वर्कर्स. ओके, विच स्टार्टेड ऑन 4th मई एंड मीन्स उसका रूट जो है वो 1st मई से स्टार्ट हुआ है. देयर वाज अ लार्ज स्केल प्रोटेस्ट ऑन 4th मई. तो उसको कॉमोमोरेट करने के लिए जो सेकेंड इंटरनेशनल है, it decided that 1st May should be celebrated as International Labor Day in 1889. Okay, the next is when Maharashtra came into existence. Okay, so if you will see Article 371 of the Constitution, so there is special provision about Maharashtra and Gujarat. So these two states came into existence. तो पहले जो था ब्रिटिश टाइम में और उसके बाद भी जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, सो वी हैड अ बॉम्बे स्टेट. सो ये जो बॉम्बे स्टेट था, इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ टेरिटरीज फ्रॉम टुडेज महाराष्ट्र एंड टुडेज गुजरात. ओके, फिर उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ. ओके, देन बोथ ऑफ द स्टेट्स दे वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस अगेन, and then there we had a state Maharashtra and Gujarat. So Maharashtra Day is also celebrated on 1st May. Okay, so on editorial we will do a lot in detail about the International Labor Day. We have 2 articles related to that, which is very important. Along with that we will also see sustainable development goals. India का इसमें क्या progress रहा है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं. So these are the 2 very important editorial articles. So before moving to the editorial articles, let's take few news from the front page. तो पहला जो न्यूज़ है ये आ रहा है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इशूज नोटिस टू सीईओ सेफ्टी चीफ ऑफ एयर इंडिया. तो यहाँ पे जो बॉडी है, इट इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन. सो इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन. Now it is a body which got a statutory status under ये act बहुत important है, the Aircraft Amendment Act 2020. Okay, now we also have another body जिसके बारे में हमने शनिवार को पढ़ा था, that is Bureau of Civil Aviation Security, which is proposing to come up with the new force on the line of the transportation sector forces in US for the management of airports in India. Now coming to this news, so who is our current DGCA? So Vikram Devdutt is the current Director General of Civil Aviation. Now Director General of Civil Aviation, इनका जो ऑफिस है ये सफदरजंग एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में है. So now this office has issued notice to Air India CEO Campbell Wilson for airline's lapse in reporting the incident on a pilot allowing a woman friend inside the cockpit during a Dubai-Delhi flight on February 27. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ें अलाउड नहीं होती कि कॉकपिट में पायलट के अलावा कोई जा नहीं सकता. अगर आप देखेंगे कि ये जो सिक्योरिटी है, ये जो रिक्वायरमेंट है, इट हैज़ केप्ट इन द वेक ऑफ दैट इन 70s 80s देयर वर मैनी हाईजैकिंग ऑफ प्लेन बिकॉज द पर्सन्स दे वर अलाउड टू गो इन कॉकपिट. तो जिसकी वजह से बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस, सिक्योरिटी इश्यूज अराइज हुए हैं पास्ट में. तो इसके लिए रूल का इम्पोर्टेंस है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज 11 डेड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना. So this is the news where of 11 people, 3 of them children from a same family from Uttar Pradesh and Bihar, they inhaled a very toxic gas, that is hydrogen sulfide gas, and then they have died. So that's the news. So there was a panic when people they came to grocery store in the morning, they fainted. The next is Prime Minister marks 100th episode of Mann Ki Baat with nostalgia. So the 100th episode of monthly Mann Ki Baat radio broadcast जो संडे को किया जाता है, द लास्ट संडे. तो ये दिस वाज द 100th एपिसोड विच फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020.
So the first edition of Mann Ki Baat, it started on the occasion of Vijay Dashmi, that is on October 3rd, 2014. Now if you will see this special program, so it was telecast live at the United Nations headquarters in New York and across all the Raj Bhavans. Then the ruling party had set up 4 lakh venues for people to hear the program. Then Union Home Minister Amit Shah listened to it at a function at Vile Parle in Mumbai, and Defence Minister Rajnath Singh at the BJP headquarters in Delhi. And then External Affairs Minister S.J. Shankar joined members of the Indian community in New Jersey to listen to this program. The next is the Kerala story, an attempt to spread hate propaganda. तो यहाँ पे एक controversy हुई है केरला में, where the Chief Minister Pinarayi Vijayan, he has said that this upcoming movie, the Kerala story, is a product of Sangh Parivar's factory of lies. So he is saying that the state can take legal action who are involved in this. तो यहाँ पे बस एक मूवी है, इसका नाम बस याद रख लीजिए, और जो इसका थीम है दैट इज लव जिहाद. सो केरला चीफ मिनिस्टर हैज सेड कि जो लव जिहाद है, सो इफ यू विल सी that many central investigating agencies, courts, and even Union Home Ministry, they have said that the allegations of love jihad is not true. It was dismissed by many of these agencies. Now, coming to the editorial, so let's take the editorial first from the International Labour Day. So यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करना है अपने नोट्स में. पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने खुद ये आर्टिकल लिखा है. सो हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? सो गिलबर्ट ई होंगबो. उसके बाद जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1919. ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है that it was not established along with United Nations. It was established before the United Nations came into existence. So the year is 1919. Okay, and then write me in the comment box that where is the headquarter of International Labour Organization. Okay, now there is a जब हम वर्ल्ड वॉर 2 जब खत्म होने वाला था, सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेशन ऑफ फिलाडेल्फिया इन 1944. तो यहाँ पे जो लेबर राइट्स था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस था. सो इफ यू विल सी दैट जो लेबर राइट्स होते हैं वो बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करते हैं. सो इफ यू विल सी दैट they allow the workers to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom, dignity, economic security, and equal opportunity. So it says that this approach is not new and it was highlighted in Declaration of Philadelphia in 1944. Now, if you will see the Sustainable Development Goal, जिसके बारे में हम अभी एक आर्टिकल करने वाले हैं, that is Goal 8, which targets on decent work for all. ठीक है, Goal 8. उसके बाद जो वर्क रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट कम्स अंडर DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. Okay, so this is very important. Goal 8 of the Sustainable Development Goal, it is related with decent work for all. Now, what is the importance of this article? So the background is COVID-19. ठीक है ना, जब से हमने कुछ चीज़ें हमने नोट कर रहे हैं, हम इकोनॉमी में भी पढ़ रहे हैं कि इन्फ्लेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, दैट इज फूड एंड फ्यूल्स सप्लाई शॉक्स, विच इज रियली बिकमिंग अ चैलेंज नॉट ओनली फॉर द वर्ल्ड बट ऑल्सो फॉर द वर्कर्स. अब जो वर्कर स्पेसिफिक इश्यूज है, देखिए वो क्या है, दैट इज रियल वेजेस दे हैव फॉलन, पॉवर्टी जो है वो बढ़ रहा है, इनइक्वलिटी जो है वो बढ़ते जा रहा है. ठीक है, उसके बाद ये जितने भी इफेक्ट हुए हैं कोविड-19 का या कॉन्फ्लिक्ट का या इन्फ्लेशन का, तो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है. फाइन. सो इट सेज दैट हमें जो फैक्टर जो है जो ध्यान में रखना है वो रखना है सोशल जस्टिस. जैसे कि हमारे प्रीएम्बल में भी अगर आप देखेंगे तो जब जस्टिस का कॉन्सेप्ट आता है, ओके, तो उसमें सोशल भी है, इकोनॉमिक भी है, ठीक है, और पॉलिटिकल भी है. तो सोशल जस्टिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट बिकॉज इट इज द benchmark for welfare state. Then it says that the next focus should be on decent work. ठीक है ना. So now here decent work जो है उसमें जो problems आ रही हैं, ठीक है, so यहाँ पे जो focus होना चाहिए that is reducing inequality, poverty alleviation, social protection, to provide social protection. Okay, so यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो कुछ अदर इश्यूज हैं वो भी हमें एड्रेस करना है, जैसे कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस जरूरी हैं, लाइक न्यू टेक्नोलॉजी विच क्रिएट्स एंड सपोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट,
then facing the challenges of climate change and ensuring we offer the jobs, skill training and transition support necessary for workers and businesses to benefit from the new low carbon era. Then treating demographic changes as dividend rather than a problem. मतलब they are talking about population की जो population है जिसमें youth की जो proportion है वो बहुत ज़्यादा अगर हो रही है तो उसको हमें स्किल प्रोवाइड करना है, हेल्थ प्रोवाइड करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करना है, जॉब प्रोवाइड करना है कि ताकि वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो बट जबकि एक एसेट हो, एक रिसोर्स हो. Okay, so then there is a need for supporting action on skills development, migration and social protection. Then the next is that the author says that Gilbert Hugbo, that there is a need for global coalition for social justice, which can create a platform to bring together a broad range of international bodies and stakeholders, and it will position social justice as the keystone of global recovery so that it is prioritized in national, regional and global policies and action. Okay. Now coming to the another article कि अब हम इंडिया स्पेसिफिक चैलेंजेस अगर देखें हमारे देश में तो इसको हम और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो वर्कर्स हैं वो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं. बट बिफोर दैट वी हैव टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेशनल लेबर डे. सो इफ यू विल सी दैट द ईयर वाज 1886. तो जैसा मैंने आपको बताया कि हे मार्केट स्क्वायर जो है यहाँ पे देखिए नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हे मार्केट मैसेकर भी कहते हैं, हे मार्केट प्रोटेस्ट भी कहते हैं. तो देयर वाज हे मार्केट स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे ये शिकागो में है. तो यहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं. पहले ये प्रोटेस्ट पीसफुल होता है, बाद में प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है. वर्कर्स का डिमांड क्या था यहाँ पे? मेनली वर्कर्स का यहाँ पे डिमांड था 8 आवर्स वर्क. दैट वाज द मेजर डिमांड ऑफ द वर्कर्स इन हे मार्केट स्क्वायर, 8 आवर्स वर्क. फाइन. बाद में जब ये प्रोटेस्ट जो है बहुत वायलेंट हो जाता है, पुलिस एक्शन भी होता है, उसके बाद 3 साल के बाद करीब 1889 में द इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस, ठीक है, दैट डिक्लेयर्ड दैट द हे मार्केट स्क्वायर अफेयर व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम May 1 टू बी डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल लेबर डे. Then in 1919, the International Labour Organization, which was established, it adopted the Hours of Work Convention, which was also ratified by British India, which says that 8 hours a day of work and 48 hours in a week. Now, if you will see that many countries like Switzerland, Denmark and Netherlands, they have reduced the hours of work also. Now coming to the Indian condition. तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे regulating work hours, तो यहाँ पे एक theory है कि whenever the economic development takes place, technological inventions and innovations takes place, when there is economic prosperity, तो ये एक कन्वेंशन है, ये समझा जाता है कि दैट पीपल विल हैव मोर लीजर टाइम टू एंगेज इन सोशियो कल्चरल एक्टिविटीज एंड सोशल वेलफेयर विल इम्प्रूव. अब हम आते हैं कोविड-19 के फेज में. जब कोविड-19 इंडिया में आया, देन मैनी स्टेट्स दे अमेंडेड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948. देन इफ यू विल सी दैट तमिलनाडु एंड कर्नाटका दे ऑल्सो इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स अ डे. ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 8 आवर्स फिक्स है, पर जब कोविड-19 आया तो टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू बिजनेस टू सर्वाइव, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स वाज इंक्रीज्ड. Then if you will see employers, especially in garment and electronic industries, they are clamoring for flexible work time regime so that they can manage export orders. मतलब employers कह रहे हैं कि हमारे पास export orders बहुत ज़्यादा है तो हमको एक flexibility चाहिए. Okay, so यहाँ पे if you will see that they have given the examples of countries like Bangladesh and Vietnam, but जहाँ पे ये जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स है इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है. अब अगर हम इंडेक्स देखें, ग्लोबल राइट इंडेक्स विच वाज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, तो बांग्लादेश की जो रैंकिंग है ग्लोबल राइट इंडेक्स में इन केस ऑफ लेबर राइट्स इट इज़ वर्स्ट. सो इट इज़ रैंक्ड अमंग द 10 वर्स्ट कंट्रीज. उसके बाद अगर हम वियतनाम को देखें ऑन द स्केल ऑफ 1 to 5 ऑन द डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स राइट्स, तो ITC ने भी वियतनाम को जो है नंबर बहुत ही कम दिया है, दैट इज 4. फाइन. सो इफ यू विल सी दैट इंडिया में अब देखिए क्या हो रहा है कि अंडर द प्रोटेक्स्ट ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफर मैनी सब्सिडीज एंड एग्जाम्पशंस टू अट्रैक्ट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक कैपिटल. ये फॉरेन कंपनीज जो आए वो हमारे स्टेट में है, बट यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स की जो प्रेफरेंस होती है दैट दे डू नॉट वांट एनी यूनियंस और दे वांट वीक यूनियंस. ओके, इन एन इंडस्ट्रियली पीसफुल कॉन्टेक्स्ट वेयर चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स आर अवेलेबल. तो यहाँ पे क्या होता है
कि इंडिया जो है इट इज़ बियरिंग द कॉस्ट ऑफ स्किलिंग द वर्कर्स एंड बेनिफिट इसका कौन ले रहा है? फॉरेन कंपनीज। अब यहाँ पे देखिए वर्कर्स के ऊपर क्या हो रहा है। सो सी, let's take the example of Karnataka. So Karnataka has increased the number of working hours a day including rest period to 12 while complying with the workly threshold of 48 hours. Then जो 3 shift पहले होता था, now we are shifting to 2 shift regime. तो इससे क्या होता है कि जो worker है it spends about 9 hours in the factory and the companies believe they can enhance production by maximizing the workers time at the factory. Now अब workers के perspective से देखें तो वो करीब 14 घंटा अपने फैमिली से अलग रह रहा है, ठीक है। सो एट वर्कर्स एज दे बिकम लेस एफिशिएंट, हाईली फटीग्ड एंड प्रोन टू इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जिसका अपना एक चैलेंज भी है। नाउ द ऑथर सेज दैट बाय एक्सटेंडिंग द आवर्स ऑफ वर्क एंड एंश्योरिंग जॉब इनसिक्योरिटी we are setting the clock back to the 19th century in the name of ease of doing business. Then if you will see that it says that due to lack of political unity as well as trade union cooperation, states are able to change labor laws without much opposition. Now coming to sustainable development goals. So these are the 17 goals. There are 231 unique indicators across 17 sustainable development goals to be met by 2030. Okay. So यहाँ पे अगर हम प्रोग्रेस देखें अगर इंडिया का, so see some of the things which are on target is indicators like neonatal and under 5 mortality related to health, full vaccination, improved sanitation, electricity access, okay, which have substantially improved. Then but here is a problem that there is disparity, okay, regional disparity कि ये जो टारगेट जो हम अचीव कर रहे हैं इसमें रीजनल डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है कि किसी किसी स्टेट में वी आर ऑन द टारगेट बट किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में वी आर सीइंग दैट मैनी डिस्ट्रिक्ट्स दे आर लैगगार्ड. Then indicators such as eliminating adolescent pregnancy, reducing multidimensional poverty, and women having bank accounts, they have improved across a vast majority of districts between 2016 and 21. Okay. Now, if you will see that the concern is that 19 of the 33 SDG indicators, the current improvement is not enough to meet the target by 2030. For example, if you will see that clean fuel for cooking, more than 2/3 of the district they remain off target. Okay. Now if you will see some other indicators related to women's well-being and gender inequality. So see, no district in India has yet succeeded in eliminating the practice of girl child marriage before the legal age of 18 years. Then the next is more than 3/4 of the district will not be able to reduce the prevalence of girl child marriage to the SDG target of 0.5% by 2030. Then if you will see that the next is despite the overall expansion of mobile phone access in India, only 56% women report owning a mobile phone with 567 districts remaining off target. Now if we take our lessons कि अब हमको ये टारगेट अचीव कैसे करना है तो उस पर हमें कहाँ कहाँ पे फोकस करना चाहिए, तो अगर हम वो दिमाग में रखें तो हम कोविड-19 से कुछ जो है वो ले सकते हैं एग्जाम्पल्स. पहला क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग एंड सस्टेन्ड पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए विच इज सपोर्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एट ऑल लेवल्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड इज दैट वी नीड टू क्रिएट अ digital infrastructure, innovative models to implement these SDGs, just like we did in COVID-19, like we had COVID data platform, Arogya Setu application, etc. So something is required in SDG targets also to break the silos. Then the next is that timeliness कि एक टाइम टेबल होना चाहिए हमारे पास to address this SDG issues. The next is the government of India had put in place rupees 1.7 lakh crore Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana and later augmented to nearly 6.29 lakh crore, which included Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana covering 800 million people. तो इस प्रोग्राम में the key was it was a mix of spending to provide direct in-kind and economic support as well as measures aimed at revitalizing the economy, small business and agriculture. तो एक ऐसा क्रॉस सेक्टोरल अप्रोच हमें चाहिए. द नेक्स्ट इज दैट वी कैन हैव अ डिकेडल प्लान वेयर वी कैन innovate with new policy path in order to achieve the SDG target. Now coming to the next news, 229 more Indians reach home from war-torn Sudan, that is under Operation Kaveri. So if you will see
that the total number of Indians who have reached home from Sudan is now 1954. The figure is still above 3000. तो उसमें से 1954 Indians they have been brought back to India. The next is SAGAR. What is SAGAR? Security and growth for all in the region. So it is the policy in which the government of India tries to cultivate friendly economic relationship in the countries in Indian Ocean region for maritime security, peace and economic growth. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि इस पॉलिसी के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज गोइंग टू हैंड ओवर अ फास्ट पेट्रोल वेसल एंड अ लैंडिंग क्राफ्ट वेसल टू मालदीव्स. ओके, उसके बाद मालदीवियन प्रेसिडेंट कौन है इस वक्त? तो इब्राहिम मोहम्मद सोली, ही इज द प्रेसिडेंट. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. द नेक्स्ट इज कि इंडिया का एक और पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी. ओके, वेयर इंडिया वांट्स टू हैव अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ऑल इट्स नेबर्स. उसके बाद मालदीव्स का भी एक पॉलिसी दैट इज कॉल्ड एज इंडियाज फर्स्ट पॉलिसी, वेयर मालदीव्स सीक टू वर्क टुगेदर विद इंडिया टू डेवलप द कैपेबिलिटीज विद इन द इंडियन ओशियन रीजन. नाउ Maldives and India, they both are members of SAARC, South Asian Association for Regional Cooperation. The next is citizens of Uzbekistan vote on reforms to strengthen the president. So voters in Uzbekistan, they have went to polls in a constitutional referendum that could allow President Shavkat Mirziyoyev to remain in power until 2040. The next is that Iran's parliament had voted in an impeachment session to remove the industry minister amid soaring prices as the Islamic Republic's economy reels under the pressure of international sanctions. So यहाँ पे the industry minister is Reza Fatemi Amin. The next is Sudan truce extended for 72 more hours as battle rages. So यहाँ पे जो अब देखिए सूडान में the airspace will remain closed until May 13 with the exception of aid and evacuation flights. Till now, more than 500 people have been killed and former Prime Minister warns of situation deteriorating into civil war again. So we already know that the fight is going on over the reforms in the army, and the two persons who are on the opposing side is the army chief Abdel Fattah al-Burhan and मोहम्मद हमदान डागलो हु कमांड्स द रैपिड सपोर्ट फोर्स. तो यहाँ पे एक प्रपोजल था कि जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा इंडियन आर्मी में, सुडानीज आर्मी में, बट इट इज बीइंग अपोज्ड बाय हमदान डागलो. द नेक्स्ट इज रशियन आर्मी रिप्लेसेस इट्स कमांडर ऑफ लॉजिस्टिक. So the Russian army has replaced its highest ranking general in charge of logistics ahead of an expected counter offensive by Kiev. So General Mikhail Mizintsev, okay, he was already under British sanction for his role in siege of Ukrainian port city of Mariupol. Okay, so now he has been sacked. Now he has been replaced by Alexei Kuzmenkov, who is a former official from the National Guard. Now, if you will see the Russia-Ukraine crisis, so Ukrainians now they have striked on Russian border village, killing 4 persons. So the strike was on the village of Suzemka, which lies just few kilometers on the Ukrainian border. Now, coming to sports. From sports, we have two important news. One from chess. The next is from badminton. So Ding Liren crowned king of world chess. So Ding Liren of China, he defeated Ian Nepomniachtchi in the World Chess Championship held in Astana, Kazakhstan, and now he is the World Chess Champion. अगर आप यहाँ पे देखेंगे that there was the absence of Magnus Carlsen of Norway, okay, who was the world's best player. Now with this win, if you will see that Ding, he has become the first Chinese to become the World Chess Champion in the open category. And now China, they holds the world title among both men and women. In women, it is Zhu Wenjun of China who is the women world chess champion. The next is Gritti Satwik Chirag duo rallies to create history. So we are now talking about the badminton championship. So यहाँ 2 players के नाम important है, Swatwik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty. Now they have broken the 58-year-old drought. मतलब 58-year-old से मेडल डुओ कैटेगरी मतलब मिक्स्ड कैटेगरी में नहीं आया था. Now it has come, so they have become the first Indians after Dinesh Khanna to be crowned champions at the Badminton Asia Championship.
The next is that they have already won the 2022 World Championship, where they were awarded the bronze medal, and then they were also awarded the 2022 Gold Commonwealth Games in Mixed Double Badminton Championship, and they have 5 career titles on the BWF World Tour. Now, if you will see that India's previous best performance in men's double at Asia Championship was a bronze medal won by Deepu Ghosh and Raman Ghosh in 1971, and Dinesh Khanna, he had won the singles gold medal in 1965 at Lucknow. The next is Sergio Perez. So he has defeated Max Verstappen to win the Azerbaijan Grand Prix. Then the Spanish Grand Prix. So if you will see Spanish MotoGP, so it has been won by Francesco Bagnaia. Okay, so he has defeated Brad Binder to win the Spanish Grand Prix. So that's from the sports. So that's all for today. We will meet tomorrow again. Till then, have a nice day. Thank you.